Hello students, this is our chapter number 1, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. Students, in this session I am going to explain macroeconomics. Students, we already discussed that there are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Means study of economics is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. Microeconomics concentrate on small individual particular economic unit. We already discussed this in microeconomics. And macroeconomics concentrate on or macroeconomics studies aggregate economy. So macroeconomics is the study of aggregates covering entire economy such as total employment, national income, national output, total investment, etc. So study of total, study of aggregate, study of entire is included in macroeconomics. The word macro is derived from Greek word macros. Macros means large, M-A-K-R-O-S. Macros means large. So study of large, study of whole, study of aggregate, study of total means macroeconomics. So study of economics is divided into two parts, micro and macro. जो स्टडी में इंडिविजुअल अप्रोच है, पर्टिकुलर अप्रोच है, पर्टिकुलर से रिलेटेड स्टडी है, दैट इंक्लूड्स इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. और जिसमें टोटल इकोनॉमी की, टोटल एग्रीगेट इकोनॉमी की, नेशनल इकोनॉमी की, एंटायर इकोनॉमी की स्टडी है, दैट इंक्लूड्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स. Now we already discussed these students, microeconomics and macroeconomics. These two terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch in 1933. And we also discussed the history of Ragnar Frisch. He was born in 3rd March 1895, Oslo, Norway, and died on 31st January 1973. He was a co-recipient of the first Nobel Prize in Economic Science in 1969. He coined many economic terms, and in that micro and macro, these two terms are very popular. Got it? So micro and macro, these two terms were coined by Professor Ragnar Frisch in 1933. Now let's discuss about macroeconomics. So macroeconomics analyze the entire economy, because students, macro means what? Whole. Macro means large. So macroeconomics analyze the entire economy. Macroeconomics analyze total economy. Macroeconomics analyze aggregate economy. That's why it deals with the total employment, national income, total consumption, trade cycle, inflation, deflation, total saving, aggregate demand, aggregate supply, general price level, etc. Because macroeconomics is the study of entire economy. So entire economy से related जो प्रॉब्लम्स है, एंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड जो कंटेंट है, ये सभी मैक्रो में इंक्लूड है. सो एंटायर इकोनॉमी से रिलेटेड द इनकम ऑफ एंटायर इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम. एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एंटायर इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड टोटल एम्प्लॉयमेंट. टोटल कंजम्पशन की, कंजम्पशन ऑफ होल इकोनॉमी, दैट इज टोटल कंजम्पशन. सेविंग ऑफ होल इकोनॉमी, दैट इज टोटल सेविंग. ट्रेड साइकिल, फ्लक्चुएशंस, अप एंड डाउन्स इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल इंक्रीज होना, दैट इज इन्फ्लेशन. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विथ एंटायर इकोनॉमी. दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द total employment, national income, total consumption, total saving, etc. It is the study of aggregates. So macroeconomics is the study of whole, macroeconomics is the study of aggregate. Now historical review of macroeconomics, it is very important, students. So what is the history of macroeconomics?
Students, in the recent years, macroeconomics emerged as the most challenging and fascinating branch of economics. It existed in the past but not as a separate branch. So macroeconomics exists in the past before microeconomics. Student, microeconomics जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल पीरियड में. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट लाइक एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप किया था. बट बिफोर माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो इट एग्जिस्ट in the past before microeconomics. So before microeconomics means in 16th and 17th century there was mercantilism. So these mercantilists adopted macro approach. So mercantilism means what? Students, mercantilism ये जो word है ये merchant से develop हुआ है. So now merchant means what? Traders. जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मर्चेंट कहते हैं. सो 16th एंड 17th सेंचुरीज़ में ट्रेड को इम्पोर्टेंस था. सो अकॉर्डिंग टू दिस मर्चेंट कि अगर कंट्री का ट्रेड डेवलप हुआ तो कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा. इससे रिलेटेड जो व्यूज़ है उन्होंने डेवलप किए, दैट इज़ कॉल्ड मर्केंटलिज्म. सो मर्केंटलिस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रेड, दे गिव इम्पोर्टेंस टू ट्रेड. सो ये जो अप्रोच है ये मर्केंटलिज्म करके डेवलप हुआ था 16th एंड 17th सेंचुरीज़ में. मर्केंटलिज्म मीन्स मर्चेंट्स मीन्स ट्रेडर्स, दैट्स वाई ट्रेडर्स गेव इम्पोर्टेंस टू ट्रेड. आफ्टर 16th एंड 17th century means in 18th century there was physiocrats. Physiocrats used the concept of national income and wealth. And according to these physiocrats, agriculture was important. So importance was given to agriculture. Students, कि basically French में ये physiocracy develop हुई थी. Physiocracy means what? Giving importance to agricultural sector, because agriculture से ही nation की जो wealth है, national income है, ये increase हो सकता है. So according to physiocrats, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज करना है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर इम्पोर्टेंट है. एंड अकॉर्डिंग टू मर्चेंट्स, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज करना है तो ट्रेड इम्पोर्टेंट है. मीन्स ये दोनों ने नेशनल इनकम को इम्पोर्टेंस दिया था. नाउ नेशनल इनकम इज़ द स्टडी पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत ही मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले ये इससे रिलेटेड जो व्यूज़ है ये मर्केंटलिस्ट ने एंड फिजियोक्रेट्स ने डेवलप किए थे. बट इट एग्जिस्टेड इन द पास्ट बट ये सेपरेट ब्रांच नहीं थी. ये सेपरेट ब्रांच 1930s के बाद डेवलप हुई. देन मैक्रो अप्रोच वॉज पॉपुलराइज्ड आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s. The foundation of modern macroeconomics as a separate branch of economics was laid down by British economist Lord John Maynard Keynes in his revolutionary book The General Theory of Employment, Interest and Money, and it was published in 1936. The Great Depression of 1930s was mainly responsible for the development of macroeconomic approach. Students, this is John Maynard Keynes and this is John Maynard's revolutionary book The General Theory of Employment, Interest and Money. So ये जो 1936 में बुक पब्लिश हुआ, ये बुक में केन्स ने ये जो डिप्रेशन पीरियड था इसके ऊपर सॉल्यूशन दिया है कि ये डिप्रेशन पीरियड से इकोनॉमी को बाहर कैसे निकाले. दैट्स वाई ये रिवोल्यूशनरी बुक था. बट इट्स सो ये जो 1930s के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हुआ और इसे पॉपुलर करने में लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स जो है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है. देन बिसाइड्स केन्स, माल्थस, विक्सेल, वॉलरास, फिशर have contributed to macroeconomics. So students, this is the history of macroeconomics and
today's life also macroeconomics is also important, because this is because macroeconomics is related with whole economy. That's why economy के अगर problem solve करने हैं तो हमें macro approach ही रखना होगा. So this is a popular branch of economics. Now let's discuss definitions of macroeconomics. So the first definition given by Professor J.L. Hansen, macroeconomics is that branch of economics which considers the relationship between large aggregates such as the volume of employment, total amount of saving, investment, national income, etc. So macroeconomics is that branch of economics which considered relationship between large aggregates, total aggregates. So large aggregates like national total saving, total investment, national income, total employment. So इससे related जो study है वो study means macro है. Second definition given by Professor Carl Shapiro, and according to him macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. So macroeconomics is a functioning of the economy as a whole, because macroeconomics studies whole economy. So these are two definitions. In short, we can say that students, macroeconomics deals not with individual quantities but with aggregate of these quantities, not with individual income but with national income. So macroeconomics deals with general price level, macroeconomics deals with national income, national output. So study of whole economy, study of large aggregates means macroeconomics. According to Professor Cannell, macroeconomics examines the forest, not the trees. It gives us a bird's eye view of the economy. Very important students, macroeconomics examines the फॉरेस्ट नॉट द ट्री. जैसे कि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर ट्री की स्टडी मैक्रो में नहीं होगी, यहाँ पे होल फॉरेस्ट की स्टडी होगी, बिकॉज इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, स्टडी ऑफ होल, स्टडी ऑफ टोटल. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉरेस्ट. So it gives us a bird eye view of the economy. यहाँ पे कोई एक सेपरेट का माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं है. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, सो छोटे से छोटे यूनिट की डिटेल स्टडी हम माइक्रो में कर सकते हैं, बट मैक्रो इज़ अ बर्ड आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी. ऊपर से अगर आप नीचे देखोगे तो आपको जो दिखेगा वो सभी एग्रीगेट मीन्स मैक्रो है. That's why it is a bird eye view of the economy. So students, these are the definitions of macroeconomics. So we can say that macroeconomics is the study of whole economics which deals with macro variables
macro variables like national income, total employment, general price level, economic growth, economic development, etc. And it examines the interrelation among these macro variables, interrelation between these macro variables and their determination and causes of fluctuation in them. So macroeconomics is a study of whole economy. Okay students, so students, in this session we discuss meaning of macroeconomics. So the word macro is derived from Greek word macros, makros, and macros means whole or large. So study of large, study of total means macroeconomics. We also discuss some historical review of macroeconomics and definitions of macroeconomics. I hope you understood these definitions of macroeconomics. Thank you.